Good evening, students. Now, we are going to discuss about pollination. Last class, we had discussed what are the reproductive parts of a plant. Reproductive part of a plant is the flower, and what are the reproductive male and female part of the flower also discussed in the last class. The male part is the stamen. Male part is the stamen also, which is consists of two parts, stamen, anther and filament, and other part is carpel or pistil. Carpel or pistil, which is the female part, which is consists of three parts. Female reproductive part is consists of three parts: stigma, style, and ovary. This is the female reproductive part, and this one is the stamen, is the male reproductive part, which consists of anther and filament. Then प्रतिष्ठा क्लियर विजिबल होची आशीष आशु ओम विजिबल होची देखो क्लियर विजिबल होची तले लास्ट क्लास में पढ़ितले द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज द stamen and female reproductive part is the carpel. Carpel consists of three parts: stigma, style, and ovary. And male reproductive part is consists of stamen, which is anther and filament. Anther and filament. Then there are two types of flowers, which are unisexual flower and bisexual flowers. Bisexual, the flowers contain either stamen or carpel are called unisexual. For example, papaya, watermelons, cauliflowers, etc. These are the unisexual flowers. Why they are called unisexual flowers? Because these flowers contain only one sex organ, means one either stamen or carpel. ये फ्लावर गुड़िकर केवल स्टामेन थी कोड़ा पपेया वाटरमेलन कॉलीफ्लावर एमानकर आइदर स्टामेन थी नहले कार्पेल थी बोथ नथिबो सेटपे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कोनती यूनि माने वन सेक्स है अ बाइसेक्सुअल फ्लावर हला द फ्लावर व्हिच कंटेन बोथ male reproductive part and female stamen as well as carpel. So both stamen and carpel dita thibo dita sex organ thibo male part or female part तार stamen thibo और carpel thibo जो flower रो हमें तो कौन कहबा bisexual flowers. Bisexual flowers तले जो bisexual flowers के जार stamen और carpel dita thibo जो flower है हमें देखो bisexual flowers क्या फॉर एग्जांपल hibiscus mustard etc. Hibiscus flower or mustard flower which contain both stamen as well as carpel. Both sex organs are present in hibiscus and mustard flower, so hibiscus and mustard flowers are called bisexual flowers. Unisexual flowers, the flower which contain either stamen or carpel, not both, either stamen or carpel. जो flower गोटे stamen थिबो नले carpel थिबो ताको unisexual flower कहନ୍ତି, like papaya and watermelon. Then
आसो इमेज नहीं कि प्रतिष्ठा देखो तब आसो ये गला यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल flowers. A seed is formed when a seed is formed male gamete and female gamete. Then a plant male gamete where male gamete is present in the plant. Now male gamete is present in the pollen grains. In the pollen grains. Plus female gamete ki stamen of anther. Anther produces pollen grains. These pollen grains contain male gamete, and these male gamete when fused or fertilized with the egg, then this egg fertilize the egg to form seed. Then, so how these pollen grains are transferred to the female gamete. The process is known as pollination. The process is known as pollination. देखो the transfer of pollen grain. The transfer of pollen grains. Transfer of pollen grains from anther of a stamen, stigma of a carpel. Stigma of carpel is known as, this process is known as pollination. The pollination is the transfer of pollen grains from anther of stamen to the stigma of carpel. The transfer of pollen grains एबे क्लियर विजिबल होचे आसो आसेस प्रतिष्ठा ओम the pollination occurs in two processes, well, two methods. Two types pollination occurs. One is self pollination. Another is cross pollination. That is the transfer of pollen grains from anther of a stamen to the stigma of a carpel of the same flower or different flower of a same plant. तमने से गोटिए फ्लावर stamen to carpel को बा anther to stigma को pollen grain ट्रांसफर हो बा आउ गोटे फ्लावर हेइथो किंतु बट सेम प्लांट से सेम प्लांट रो आउ गोटे फ्लावर को यदि या anther रो pollen grain ता आउ गोटे फ्लावर को स्टिग्मा ट्रांसफर हला ताको कहबा सेल्फ पॉलिनेशन अब क्रॉस हला द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम anther of stamen of a one plant to the stigma of a carpel of different plant with the same kind.
तापर गोटे प्लांट रो स्टामेन आंथर रो पोलन ग्रेन टा ट्रांसफर हे कि जीवो कार्पेल टा थिबा स्टिग्मा को से को प्लांट रो फ्लावर को जीवो ना आउ गोटे प्लांट रो फ्लावर को जीवो जो फ्लावर टा सेम काइंड बा सेम स्पेसीज रही बुझेला सपोज गोटे हिबिस्कस प्लांट अछि हिबिस्कस प्लांट रे गोटे प्लांट रे बहुत गुडे फ्लावर अछि गोटे फ्लावर रो तार से गोटे फ्लावर भीतर थिबा आंथर रो तार सही स्टिग्मा को जदि पोलन ग्रेन ट्रांसफर हला से भी सेल कला जदि सही प्लांट रो गोटे फ्लावर रो आंथर रो पोलन ग्रेन टा आउ गोटे सही प्लांट रो आउ गोटे फ्लावर रो स्टिग्मा को ट्रांसफर हला से भी मते सेल बट क्रॉस पॉलिनेशन होची एठी गोटे हिबिस्कस प्लांट अछि आ गोटे हिबिस्कस प्लांट सेठी अछि तले एही हिबिस्कस प्लांट रो आंथर रो पोलन ग्रेन टा ट्रांसफर हे यदि अदर प्लांट को अदर से हिबिस्कस प्लांट को ट्रांसफर हे कि तार स्टिग्मा को जाए पोलन ग्रेन ताको कहिबा क्रॉस पॉलिनेशन पॉलिनेशन कोन because self pollination hela the transfer of pollen grains from anther of a stamen to the stigma of a carpel in a same flower or a different flower of a same plant तमने pollen grain टा यदि anther रू सही फ्लावर स्टिग्मा को ट्रांसफर हला ताको सेल्फ कोइ परबा नले सही फ्लावर रो गोटे फ्लावर रो आंथर रो अदर फ्लावर स्टिग्मा को जाउ तो बट से अदर फ्लावर टा सही प्लांट रे हितला तले तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर to the stigma of the carpel in same flower it's called self cross hela the transfer of a pollen grain plant to the stigma of a carpel in another plant of same kind it's called cross pollination cross carried by insects birds winds water etc suppose while a bee honey sits on a flower for collecting nectar. While sitting in a flower, the pollen grains in the anther are stick to its leg or flies away to another flower of the same kind from this insect. So that is why pollen grains are transferred from anther of stamen to the stigma of a carpel to another flower of same plant or same kind plant of different okay there and these pollen grains are pollination or cross pollination the pollen grains are reached at the stigma is the female part of the flower the stigma कि जो कार्पेल गोटे पार्ट स्टिग्मा ए स्टिग्मा रासी जतल पोलन ग्रेन गुडी को अंतर रासी पहुंच गले ए पोलन ग्रेन रे कोन अछि मेल गैमेटेज ए पोलन ग्रेन पहुंचला पर कोन हुए एक्चुअली या पकड़ी जो स्टिग्मा रे कार्बोहाइड्रेट बायोकैटालिस्ट ए बडे सब मटेरियल्स अछंती जोडा एको स्टिकी करी रखी या सेटू खसीबे नीट लागी रही जो अठाळे आई तापर ए जो पोलन गुडी को पोलन ग्रेन गुडी को कोन होंती तर टू लेयर्स है आउटर लेयर टा बाहर जो इनर लेयर टा ब्रश करके भीतर को गोटे ट्यूब भले है कि बड़ी जो डाउनवर्ड एटा आस्ते आस्ते कोन हबो पूरा गोटे ट्यूब आकार रे बड़ी बड़ी के जीवो सेटा कोनती पोलन ट्यूब ये जो पोलन ट्यूब भीतर मेल गामेट जाउछ ये पोलन ग्रेन भीतर मेल गामेट से मेल गामेट है पोलन ट्यूब आकार अरे ये बड़ी बड़ी की करता जाई कोन हो ना ए भीतर ये कोन हो ना पोलन ग्रेन गुडी को ओपन है जो कोठी ओभारी रे थिबा एक सहित विकसित से देखिए